Hello and welcome. My name is Manish Katiyar, Assistant Professor, Axis Institute of Planning and Management, Kanpur. So, in this lecture, we will cover about credit standards, credit period and credit terms, etc. Obviously, we are here to discuss about receivables. This lecture is from unit number 3rd, and unit 3rd is basically on management of receivables. Now, credit standards. What is credit standards? क्रेडिट ग्रांट करने के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट द क्रेडिट टर्म्स, क्रेडिट रेटिंग्स and credit worthiness of a customer. Now, credit standards. Credit standards means the rules or patterns or standards which is decided by our company, because we have to offer credit to our customers. So, what criteria as a finance manager we have decided, we have set. So, here we are discussing about the credit standards. Credit standards of a company lay down minimum requirement of the evaluation of credit to its customers. Suppose if we are in the industry from long times, a new customer has just come up and ask for credits. पहली बार, first time we are dealing with our new customer, whether we will allow him a credit or not? Obviously not, because we don't know him, we don't know his paying pattern, we don't know his credit rating, we don't know his credit worthiness, कुछ भी नहीं मालूम है, तो how we will allow him a credit? Okay. The credit standards of a company lay down minimum requirement for the evaluation of credit to customers. आपके पास भी, सपोज आपके पास कोई पर्सन उधार मांगने आता है, तो क्या आप उसको पैसे ऐसे ही दे देंगे? या आपका एक फ्रेंड है, आप जानते हैं उसको, काफ़ी बचपन से आपके साथ में पढ़ा हुआ है, नहीं, ही बोरो सम मनी फ्रॉम यू एंड ही सेज प्लीज़ कुछ हेल्प करो, बहुत ज़रूरत है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? ऑब्वियसली यहाँ पे आप दोस्ती देखेंगे, बट बिजनेस में सबसे पहले देखा जाता है कि पेइंग कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर. इफ़ यू अप्लाई फॉर ए बैंक लोन, बैंक सिंपली विल verify your earning resources, your earning capacity. In the same way, if all these are the trade credit, please note the word trade credit. Word trade credit. Simply a person or a customer comes to me and asks for credit, that means he is asking for trade credit. वो कह रहा है कि सर आप हमको आज अभी उधार माल दे दीजिए, मैं आपको 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा. तो व्हाट ही इज आस्किंग, ही इज सिंपली आस्किंग अ ट्रेड क्रेडिट. ठीक है, वर्ड को कंफ्यूज मत करिएगा. द नेक्स्ट है, such a policy would be appropriate for the companies which do not want to take higher risk. If as a company I don't want to take higher risk, I will not allow him the customer's credit. I will not allow him trade credit. Why? Because the fund which I have invested, whether in the fixed capital or current assets, is a borrowed fund, not my fund. तो जब हम खुद फंड बोरो करके ला रहे हैं, दूसरों को कैसे उधार दे दें और देंगे, तो फॉर जब भी हम किसी को क्रेडिट में देंगे तो उसके लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करेंगे. द कंपनी में फॉलो
a very liberal standard and be very aggressive in taking the risk. Liberal policy हम लोग follow कर रहे हैं. Suppose, sorry. Suppose लिबरल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं. लिबरल स्टैंडर्ड ठीक है, आप ले जाइए क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस है, व्यापार है, हम लोग आते जाते रहेंगे, आगे मिलते जुलते रहेंगे, पेमेंट्स आते जाते रहेंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं. बट वेरी एग्रेसिव इन टेकिंग द रिस्क. एग्रेसिव, हम रिस्क लेना चाहते हैं. नहीं साहब, ठीक है, आप लेके जाइए, आप बिजनेस करिए. क्या ये पॉलिसी हर कस्टमर के लिए एक हो सकती है? ऑब्वियसली नॉट. हर कस्टमर्स के लिए एक नहीं हो सकती है. द कंपनी यूजेस सम ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटेटिव इंडिकेटर फॉर एस्टैब्लिशिंग द क्रेडिट स्टैंडर्ड्स. नंबर 1, पेमेंट पीरियड. सेकेंड, selecting financial rates and rating based on financial ratios. हम उसके फाइनेंशियल्स को स्टडी करेंगे, हम अपने पेमेंट पीरियड को देखेंगे, फाइनेंशियल रेट्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद ही क्रेडिट स्टैंडर्ड्स डिसाइड करेंगे. ये हम लोग ऑफ़र करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा क्रेडिट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर किसी भी पर्सन को क्रेडिट अलाउ करने से पहले क्या डिसीजन ले. नेक्स्ट, द सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑब्टेन्ड through the market about the credit worthiness of the customer may also feature as one of the item in the credit standards. These quantitative and subjective indicators may provide the basis for establishing and enforcing the credit standards. At any point of time, the company would be interested in examining the effect of change in credit standards. This is done by comparing the profitability generated by lowering down the credit standards and the added cost of account receivables. So long as the profitability is more than the added cost, the company can lower down the credit standards. Lowering down the credit standard would have the following effects. हम लोग क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को लोअर करके लेके आना है. स्ट्रिक्ट नहीं है, लीनियंट हम लोग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं क्रेडिट, उसके बारे में बात करी जा रही है. क्या बात करी जा रही है? वी आर फॉलोइंग द लीनियंट क्रेडिट स्टैंडर्ड्स. इंक्रीज इन एवरेज कलेक्शन पीरियड, इंक्रीज इन सेल्स, increase in account receivable investment, increase in bad debt losses, increase in servicing cost of account receivables. लीलियंट अगर हम पॉलिसी फॉलो करें, ठीक है, आज नहीं पेमेंट कर पाया कस्टमर, चलो कल पेमेंट करें, कल नहीं कर पाया तो 1 महीने बाद करें, इस तरह की पॉलिसी, बड़ी लिबरल लीलियंट टाइप की पॉलिसी फॉलो करें. उसका इफेक्ट क्या होगा वो डिस्कस किया जा रहा है. इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड, लीनियंट पॉलिसी फॉलो करेंगे, कलेक्शन पीरियड इंक्रीज हो जाएगा. अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, इफ कलेक्शन पीरियड इज इंक्रीज, additional funds will be blocked with debtors. If additional funds will be blocked with debtor, we require that funds for working capital, we simply borrow. If we borrow additional fund, we have to pay additional interest. If we have to pay the additional interest, our profit margin will shrink, and our profit margin is shrink, our EPS will shrink, and if our EPS is shrinked, dividend payout ratio will decrease, and dividend payout ratio decreases, then market valuation and dividend, obviously dividend will be delayed. So, long term impact, what I am telling, please try to understand, although this is the topic of working capital, but you must, as a finance student, you must know the impact of any policy on the shareholders fund और borrowers funds. क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके एक गलत डिसीजन का, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ. प्लीज़ इसको ऐसे मत लीजिए कि सर वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट आप कहाँ तक चले जाते हैं. यू हैव टू शो, it is necessary to show the larger picture so that you can understand or estimate the importance of this concept.
Increase in sales, obviously if we increase the credit collection period, our sales will increase. Sales will increase, the additional funds will parked with blocked with debtors, same is given. Increase account receivable investment, increase in bad debt losses, increase in servicing cost of account receivables. The effect of lowering down the credit standards or key variables such as sales and investment and account receivable can be quantified by the cost versus benefit of changes. Again costs and benefit. Cost and benefit. In the last topic I have already explained you what is cost and benefit. और ये cost and benefit हर आदमी करता है, हर अपने रूटीन लाइफ में करता है. कॉलेज अगर हम अपनी पर्सनल व्हीकल से जाएंगे तो पेट्रोल के क्या कॉस्ट आएगी, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो कॉस्ट क्या आएगी. तो हर तरीके की एनालिसिस हर आदमी करता है. Although you are working in a finance department of a company or organization, it is your responsibility to work out cost and benefit analysis from each and every aspects. Next, it may be difficult for the firm to make any distinction between the credit standards for new customers. Relaxing the credit standard for new customers would have certainly some impact on payment behavior of existing customers. What they are trying to be of existing customers. Suppose there is a new customer in our portfolio. The customer is no new V means company. Company offered him a lenient credit policy, additional credit is allowed. Then our existing customer will complain, sir मेरी क्या गलती थी, जो नए कस्टमर को आप एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं, एडिशनल क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं, ये बात करी जा रही है. You may take the following approaches in assessing the effect of lowering down the credit standards. अगर हम क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को लो कर देते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में बात करी जा रही है और बता रहे हैं आपको यहाँ पे ये. डिटरमाइंड फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एडिशनल सेल्स. लास्ट टर्न में हम लोगों ने नंबरिकल सॉल्व किया है. इफ़ वी अलाउ द एडिशनल क्रेडिट पीरियड वी विल gain from that additional credit period or not. Determine increase in bad debt losses, collection expenses and other costs arising from relaxing the standards. Determine increase slowness of average collection period and additional amount of investment requirement in accounts receivable and multiply it by the required rate of return on investment in account receivables. These just are the part of theory. We have to simply solve the numerical questions to understand this concept very carefully, and for this we have already solved a illustration or a question in our lectures, but as a student you must practice these numerical questions through your textbook or other books. Next, credit period. The credit period lays its multi-phased effect on many aspects of the volume of investment and receivables. Its indirect influence can be seen on the net worth of the company. A long period credit terms may boost sales, but it also increases investment in receivables. What? A long period credit terms may boost sales, but it may also increase investment in receivables. हमको यही तो कम करना है, ये बढ़ रहा है हमारा. If sales are increasing, our amount of receivables is also increasing. This practice increase is avoided. This practice should be avoided.
यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज होना चाहिए, उस पर हमको फोकस करना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिट while determining a credit period, a company is bound to take into consideration various factors like buyer's rate of stock turnover, competitors' approach, the nature of commodity, margin of profit and availability of funds, etc. The period of credit from it differs from industry to industry. Obviously, FMCG सेक्टर में ट्रेड क्रेडिट हम लोग जल्दी अलाउ करते हैं क्योंकि कस्टमर के पास गुड्स जाता है, रिटेलर्स के पास पहुंचता है, वहाँ से कस्टमर्स बाय करता है, फिर पेमेंट करता है। तो जो साइकिल है, वर्किंग कैपिटल जो साइकिल है वो जल्दी पूरा होता है। और अगर आप गोल्ड के सेक्टर में बात करें, लाइक एग्जांपल अगर आप किसी भी ज्वेलर्स का लें तो वहाँ पे देखेंगे तो उनका जो साइकिल है वो थोड़ा सा स्लो होता है। तो टर्नओवर का जो साइकिल जितनी जल्दी रिपीट होता है वो हम लोगों ने बिगनिंग की यूनिट्स में डिस्कस किया होता है। टर्नओवर साइकिल जितनी जल्दी कंप्लीट होगा उतना ही अच्छा, जितना देर से कंप्लीट होगा उतना ही प्रॉफिटेबल नहीं होता है। इन प्रैक्टिस द फर्म ऑफ सेम इंडस्ट्री ग्रांट वेरिड क्रेडिट पीरियड टू डिफरेंट इंडिविजुअल as most of such firms decide upon the period of credit to be allowed to a customer on the basis of his financial position in addition to the nature of commodity. हम किसी भी कस्टमर को क्रेडिट पीरियड जब अलाउ करेंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या है वो देखेंगे एंड नेचर ऑफ कमोडिटी देखेंगे, क्वालिटी इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन, सारी चीज़ों को देखकर करना है। ठीक है, वेन एवर यू आर इन ए स्पेसिफिक इंडस्ट्री, सपोज आप किसी एक इंडस्ट्री में, सपोज आप फार्मा सेक्टर में काम कर रहे हैं या सीमेंट सेक्टर में काम करें, तो आपको मालूम है कि जब आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो जाएंगे, आपको मालूम हो जाएगा कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर, कौन सा जो डीलर है वो आपको टाइमली पेमेंट करता है, कौन सा पेमेंट को नॉर्मली डिले कर रहे होते हैं। तो ये जब आप इंडस्ट्री में वर्क करेंगे तब आपको आइडिया आने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द जनरल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग क्रेडिट of a firm is to coin it terms of net date, तो मालूम ही है आपको। if a firm's credit terms in are net 30, it means that a customer expected to repay his credit obligation within 30 days। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिस्काउंटिंग वाले कॉन्सेप्ट में भी। a free credit period granted to pay for the goods purchased on accounts tends to be tailored in relation to the period required। देखिए, on accounts tends to be a tailored means कि द फ्री क्रेडिट पीरियड, किसी भी कस्टमर को कितना क्रेडिट पीरियड ग्रांट करना है, ऐसा नहीं है कि हम यूनिवर्सल पॉलिसी या अम्ब्रेला पॉलिसी फॉलो कर सभी के लिए, ब्लैंकेट, सॉरी नॉट अम्ब्रेला, ब्लैंकेट पॉलिसी, हम कोई ब्लैंकेट पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे सभी के लिए, हम डिपेंड, ये टेलर मेड है। टेलर मेड मतलब जैसा कस्टमर होगा उसी के अकॉर्डिंग, उसी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड कर देंगे। यूनिवर्सल और ब्लैंकेट पॉलिसी फॉलो नहीं करनी है। अ फर्म में टाइटन इट्स क्रेडिट पीरियड इफ इट फॉल्ट केसेस टू ऑफन एंड फियर्स अक्यूरेंस ऑफ बैड डेट। नॉर्मल सी बात है, इफ अगर कस्टमर पेमेंट करने में फॉल्ट करता है, बैड डेट्स के हमको चांसेस हैं, हम अपनी क्या करेंगे, क्रेडिट पॉलिसी को टाइट कर देंगे। तुरंत बोलेंगे भाई क्रेडिट पीरियड 30 डेज नहीं है, 15 डेज ही रहेगा। अब तुरंत हम बोलेंगे अगर आपने क्रेडिट विद इन टाइम पेमेंट नहीं किया तो हम आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर देंगे। तो इस तरह की टाइट क्रेडिट पॉलिसी। लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी मतलब ठीक है, नहीं कर पाते बाद में कर देंगे, वो नहीं फॉलो करना है। लेंथ द क्रेडिट पीरियड ऑफ एनहांसिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट थ्रू सेल्स एक्सपेंशन will be less than the increment profit, but the increase in sales alone with extended credit period would increase the investment in receivables too, because of the following two reasons. Incremental sales result into incremental receivables, the average collection period will be extended। यहाँ पे देखिएगा कितनी अच्छी बात लिखी है, very nicely quoted। The incremental sales results into incremental receivables।
if we are allowing additional credit period or we are following lenient credit policy, the sales will increase, and if sales will increase, the receivables amount blocked with receivables will also be increased and average collection period will get extended. इसी को तो कम करना है, इसी पीरियड को कम करना है, बढ़ाना नहीं है. नेक्स्ट, credit terms in receivables management. Credit terms in receivable management. The other important dimension of account receivables management is to decide the terms of credit advance. Terms. What is terms? If we are allowing the credit period, obviously we will impose some conditions, some terms. The decision about the credit terms would involve the decision about the following variables: credit period, कितने समय का क्रेडिट पीरियड देना है, 30 डेज से बढ़ा के 50 डेज करना है, 60 देना है, 70 करना है या कम करना है. क्रेडिट लिमिट अप टू ₹1 लाख, इतना क्रेडिट, 50,000 इतना क्रेडिट लिमिट की बात कर रहे हैं. कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना ऑफर करेंगे कस्टमर्स को हम, एंड डिस्काउंट रेट एंड डिस्काउंट पीरियड. देखिए, जब भी हम कैश डिस्काउंट की बात करते हैं तो कैश डिस्काउंट पर ध्यान रखेंगे, कैश डिस्काउंट हमेशा पेमेंट इन या कलेक्शंस को स्पीड अप करने के लिए किए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, क्रेडिट पीरियड इज द टाइम फॉर विच the company is willing to allow their customers not to pay their bills. By the end of the credit period, the company expects that the customer would pay their bills. At any point of time, there may be interested customers in a longer credit period. If a company liberalizes its credit period, the company may be able to attract such customers, but at the same time, the extension of credit period means मोर इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट्स. ये ध्यान रखिएगा, अगर एक्सटेंशन कर रहे हैं क्रेडिट पीरियड में, मोर इन्वेस्टमेंट, और यही हमको नहीं करना है. पूरा एक एग्जांपल के थ्रू हमने इसको क्लियर किया हुआ है. इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और बताया गया कि किस तरीके से क्रेडिट पीरियड को इंक्रीज़ करने से हमारा रिसीवेबल में अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है. पूरे एग्जांपल के थ्रू दिया गया है. ये एक थ्योरेटिकल पूरा पार्ट है हमारा, क्रेडिट स्टैंडर्ड, क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट, और कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजर के स्किल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सम प्रैक्टिसेस यू विल understand only when you will face actual situation and you will work in the industry. Here I am giving you just an overall idea about how to take decision relating to allowing the credit period. Please remember, if you are extending the credit period, the amount of receivables will also increase. If amount of receivable increase, you have to work out on cost and benefit analysis, and you have to consider the bad debt losses also. So, in the given example, ADE Limited, a detailed study is done. Please go through this topic. Okay. So, these are the part of this discussion. Whole discussion is concluded through this numerical problem, through this case study. Please go through this and understand how the increase in amount of credit impacted the risk and impacted the bad debt losses. So, that is all for this unit. Thank you for being with me. Thank you very much.